Hi. Hi, are you sure this course is just for 2499? Yes, and you know this is the only course with this expertise across the world. No way! Yes way. Don't delay. Enroll now. Geeks learning together. Hi. Hi, are you sure you can prepare for product based companies through this course? Yes, sitting at home? No way! Yes way. Don't delay. Enroll now. Geeks learning together. Yes. Hey, what do you mean by a self paced course? Well, the course material is available in the form of video lectures. And there are multiple practice problems that come along as well. So, you can access all of it anywhere, anytime. And they are available to you for lifetime. No way! Oh, yes way. Don't delay and enroll now. Geeks learning together. Hi, very good evening, everyone. Welcome to the another session of live mock DSA interview where we conduct interviews with our candidates. Very pleased to see you all here. So, let me quickly introduce myself first. My name is Suniti, and I'm a mentor here at Geeks. So, let me add our today's candidate. Hi, Raman. Hello everyone. How are you? I'm fine, ma'am. All right. So, welcome to this interview session. So, can you Thank you, ma'am. introduce yourself to us? Okay, ma'am. Everyone, my name is Raman. I'm from third year pursuing my BTech from the Purnima Group of Institution. I'm currently living in Jaipur, and I'm currently doing Flutter as my Android development, and I'm doing some DSA questions in the lead code. All right, Raman. Thanks for the wonderful introduction. So let me quickly explain you how we are going to proceed. Google Doc link has been shared with you, right? Yes, So ma'am. I will be writing down the question there. Yeah, and then you need to explain your approach, and you can write a pseudocode as well. And then once when we are sorted on that part, I will share the GFG practice portals link with you, and then you can code it there. All right. Okay, ma'am. Okay. So can you please share your screen? Yeah, sure, man. Just wait a second. Yeah. I think my screen is visible. I think so. Yes, your screen is visible. Can you open the doc? Yes, I think it Yes. is. All right. So let me write down the first question. Given two trees. Ma'am, trees, I don't know. Uh, Maybe you can just look at the question first. Like it is not that difficult question. Like it's an easy level question. So maybe you can give a try. Ma'am, actually, from I think I've done D. I just started my DSA in like 1 month ago, so I did not reach at the trees part. Oh, So all I right. have a little bit knowledge only. All right. Okay. So let me ask you some next question. Like okay, just give me a moment. Yep.
Okay. All right. So that is your question. Given an array, you need to find the equilibrium point. Okay. So equilibrium point is such that sum of all the elements before it is equal to sum of all the elements after it. Okay. Let me help you with the test case. So for example, if it is 13522, okay. So in Yes, this ma'am. case, the equilibrium position will be at position 3. Uh, Output that you have to print is 3. Output will be 3 because see, this is the third position, right? We have 5 here. Yes, ma'am. So sum of the elements before 5, that is 1 plus 3, that is giving us 4, right? And sum of the Yes, elements ma'am. after 5, that is 2 plus 2, that is also giving us 4, right? So that's Yes, why we ma'am. are saying that the element at position 5 is equilibrium position, right? So Okay, you ma'am. need to find out that in an array that is given to you. Okay. Yes. So मैम सबसे पहले तो आई कैन डू दिस थिंग लाइक ये एरे है तो हमें सबसे पहले तो ट्रैवर्स करना पड़ेगा इस एरे के अंदर कि पहले अपन क्या करेंगे कि वन को ट्रैवर्स करेंगे फॉर एग्जांपल मैं लीनियर सर्च यूज़ करता हूँ तो फर्स्ट में क्या करूँगा मैं वन लूँगा एंड मैं बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर दूंगा फर्स्ट को छोड़ के और साथ के साथ मैं कंपेयर करता रहूँगा इससे मैं 2 लूप लगाऊंगा ये चलेगा फ्रॉम आई मतलब फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एक ये चलेगा और एक सेकंड लूप में चलाऊंगा अब फॉर लूप से एक 2 पॉइंटर अप्रोच आई कैन यूज हियर एक सेकंड लूप चलेगा लास्ट टू फर्स्ट Okay. ठीक है तो मैं फर्स्ट टू लास्ट में मैं क्या करूँगा कि मैं एक पॉइंटर में आगे बढ़ा और मैं चेक करूँगा कि वो जो जितने भी पॉइंट्स में मैं आगे बढ़ा मतलब इंडेक्स जैसे मैं 0 पे हूँ तो फर्स्ट इंडेक्स की मतलब ऐड कर लेंगे कि फर्स्ट पे 1 आया और बाकी के 0 मतलब जितना भी एडिशन आएगा लाइक 8 और 12 फिर मैं चेक करूँगा क्या ये सम इक्वल है अगर ये सम इक्वल नहीं है फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा तो फिर मैं चेक करूँगा कि 1 प्लस ये 3 ये सब ये सब आप किसके इक्वल चेक कर रहे हैं? ये सब मैं उसके चेक कर रहा हूँ कि जब मैं सेकंड जो मैं पॉइंटर चला रहा हूँ तो उसका जो सम आएगा उसके इक्वल चेक कर रहा हूँ Okay, like your one pointer is at the first position and your another pointer is at the last position, right? लास्ट पोजीशन यस मैम So, so initially your pointer is having 1 and 2, right? यस मैम Okay, so आप 1 and 2 को इक्वल चेक करेंगे कि वो इक्वल है या नहीं, राइट? यस मैम फिर ऑलराइट. मैं एक पॉइंटर आगे बढ़ाऊंगा और जो सेकंड पॉइंटर उसको एक स्टेप पीछे मतलब इंडेक्स -1 तो फिर मैं चेक करूंगा कि जो दोनों पॉइंटर्स हैं उन दोनों का सम मतलब जितना भी उनका सम आएगा वो इक्वल है देन जो मेरा और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा फर्स्ट प्लस 1 मतलब जो भी उसके फर्स्ट प्लस इंडेक्स है क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा जो पॉइंट है उसके जस्ट राइट और लेफ्ट में जो आंसर है मेरा वही मिलना चाहिए लाइक एडिशन दोनों का सेम होना चाहिए तो फिफ्थ जो पॉइंट मेरे को वैसे मिल जाएगा या तो मैं सेकंड इंडेक्स -1 कर दूंगा या फिर मैं फर्स्ट का इंडेक्स +1 कर दूंगा तो मेरे को उससे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो मेरे को मिल जाएगा
All right. So the approach that you are saying, according to that, agar let us say array is 1 3 5 6 2 2. Okay. So in that case, जब आपका फर्स्ट पॉइंटर 1 and 3 पे आएगा एंड सेकेंड पॉइंटर जब 2 पे है, ठीक है, तो इस केस में भी सम 4 आ रहा है. तो इस केस में आप इक्विलिब्रियम पॉइंट, बट इस केस में एक्चुअली हम लोग के पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है नहीं, राइट? यस मैम, तो तो रिटर्न नहीं। बट आपका ओके आपके अप्रोच के अकॉर्डिंग वी विल गेट एन आंसर. तो मैम, इसमें एक कंडीशन लगा देंगे कि इफ जो फर्स्ट पॉइंटर प्लस प्लस इज इक्वल्स टू सेकंड पॉइंटर माइनस माइनस, मतलब अगर उनकी वैल्यू सेम आती है तब तो मैं रिटर्न कर दूंगा मेरा वो पॉइंट जो भी इंडेक्स होगा, और अगर सेम नहीं आती है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। ओके. लाइक इस तरीके से होगा कि मैं पहले 3 पे आ गया और फिर मैं सेकंड पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। ऑल अब मैं राइट. चेक कैन करूंगा कि फर्स्ट पॉइंटर प्लस प्लस कर दूंगा तो ये फिफ्थ वैल्यू आ जाएगी, और इसको मैं माइनस करूंगा तो सिक्स्थ वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं चेक करूंगा कि अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, मतलब मैं जो पोजीशन पे खड़ा हूँ वो एक सेंटर पोजीशन है, और फिर मैं अगर वो उन दोनों की वैल्यू सेम है और सम भी सेम है, तब तो मेरा पॉइंट जो मैं जिसमें मैं खड़ा हूँ वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वरना वो पॉइंट इक्विलिब्रियम नहीं है। लाइक व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर पोजीशन? सेंटर पोजीशन उसका मिड पॉइंट, सॉरी मिड पॉइंट, लाइक इसका मिड पॉइंट 2 है, तो मैं क्या, जब मैं 3 पे पहुंचूंगा और जब मैं 6 पे पहुंचूंगा तो मैं क्या करने वाला ओके, हूँ, आई फर्स्ट थिंक का आई एम जो हैविंग इंडेक्स सम है वो नेटवर्क आगे बढ़ा इश्यूज. देंगे और सेकंड का इंडेक्स को एक माइनस कर देंगे। कैन यू हियर मी? और एक सेकंड में यस मैम, व्हाट यू सेइंग? All right. Apologies for that. I guess there is some network issues from my end. Okay, Raman, continue what you were saying. मैम, व्हाट वर यू आस्किंग, लाइक? Yeah, like you were saying that you will find out the center position. So the equilibrium point need not to be a center element, right? ओके Yes, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो मिड में एलिमेंट आ रहा है वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा. इट कैन बी एनी एलिमेंट बिफोर और आफ्टर इट. ओके Like the approach you said that you will check if the first pointer is equal to the second pointer minus one or not. Like that approach should work fine, because in that case we can check it if यस मैम। we have traversed the first half and the second half of the array. So that can be used. Can you write down this pseudocode for your approach? ओके मैम, फर्स्ट
You don't need to write down the full statements, right? You can Okay. just, yeah, you can just write the codes. Yes, ma'am. Yeah. Um, it is J minus and minus. I don't know why this is. Okay. Just a second, ma'am. Just a sec. Yeah, sure. Yeah, till then, everyone, as I can see, all of you almost shared the correct code. So that's really nice. Yeah, prefix sum approach is the correct thing that we are going to do here. And naive approach will take n square. That's correct. And also, like, if you all want to, join these sessions, then there is a Google form link in the description. So you all can fill it. Okay. Like, even if it is just fill out once, I mean, don't self reject, right? So just keep on practicing and just try to fill it out and do the practice. Like, you should be able to solve at least 2 3 easy to mid level questions in a time span of 60 minutes. So that is the criteria. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm back. Actually, some home issues. Oh, और यस मैम। तो इसके अंदर एक मैं क्या कर रहा था, एक सेकेंड जस्ट सेक। ओके, सो मैं इसके अंदर एक लेफ्ट सम यूज कर लेते हैं। तो लेफ्ट सम मींस जो एरे का लेफ्ट साइड से अपन सम करेंगे वो लेफ्ट सम इज इक्वल्स टू 0, एंड जो राइट साइड से जो अपन सम कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो जब ओके, सो मैं जब इस पॉइंट, एक सेकेंड, हमें एन तक ही, एन से पहले ही पहुंच जाना है। और यहाँ पे जे से ओके, जे पे जे आई प्लस वन। जस्ट अ सेकेंड में मैं थोड़ा सा मेरा लूप चेक कर रहा हूँ। जे okay. इज ग्रेटर देन आई प्लस ओके, जे एन तक जाएगा लास्ट। ओके, तो है ओके मैम। फर्स्ट पॉइंटर में मैं, मेरे को सम करना मैं रह गया। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, और जे इज इक्वल्स टू 0, जे 0 से स्टार्ट करेंगे और जे लेस देन आई तक। जे ओके, जे प्लस प्लस। इसके अंदर मैं जो भी मेरा सम होगा, लेफ्ट सम, वो मैं कैलकुलेट करूंगा ए आर आर ऑफ आई। तो इसके अंदर जितने भी मेरे एरे है उसका इसके अंदर सम आ जाएगा। और इसी तरीके से जैसे यहाँ पे जे है, तो इसी कंडीशन की मदद से मैं राइट सम को कैलकुलेट कर दूंगा। और इफ जो लेफ्ट सम इज इक्वल टू मेरा राइट सम आएगा, एक सेकेंड, इज इक्वल टू राइट सम, अगर वो इक्वल है तब तो मैं वो इंडेक्स को रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न आई। और अगर ये मेरा करेक्ट नहीं आता है तो मैं रिटर्न -1 कर दूंगा। यस मैम। Okay. यस Is मैम। what is the time complexity for this code? इसके मैम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जस्ट सेकेंड, मैं 2 3 लूप चला रहा हूँ तो बिग ऑफ एन स्क्वायर में आएगी इसमें। All right. Okay. So can you think of any approach which will run in a linear time complexity? मैम, इसके अंदर एक बेटर अप्रोच जो मेरे को लग रही है वो है बाइनरी सर्च।
क्योंकि हमें एक्चुअली सर्च तो करना ही है, और जहाँ तक इक्विलिब्रियम पॉइंट का होता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि अपन n/2 से पहले आंसर मिले या फिर n/2 तक आंसर मिल जाए। अब Okay, can you tell me why this conclusion? Because विच it is really not necessary that you will get your answer before n by 2. There is no any such या pattern. ओके, Yeah. सो मैम अभी तो यही अप्रोच आ रही है, बाकी अप्रोच आई कैन नॉट All right. थिंक। Okay. Okay, I'll just give you a hint because as this is an n square approach, so this is not the most optimal one, right? यस मैम। So yeah, let me just give you a hint. You can create an array where you can store the sum of all the elements till a point. Have you heard of this prefix sum thing? यस मैम, यस मैम, आई हैव हर्ड अबाउट इट। Yes, so you can create a prefix sum array, right? And then you can start iterating your array from the first point, right? ओके After creating the prefix sum, and when you will start iterating from the first point, what maybe you can just keep on subtracting your first element, and inside some another variable you can keep on adding your last element, right? ओके And maybe then you can check if it is working or not. Like this is you can use this prefix sum approach, right? So just यस try मैम, for यस मैम। that if you are able to figure it out. मैम यू आर सेइंग कि हमें पहले जितना भी व्हाट यू कैन से जितना भी मेरे को सम है एरे के अंदर वो मैं ऐड करते जाऊं। आर Yeah, यू सेइंग दिस? prefix sum approach. Yeah. ओके, सो एक फॉर लूप लग जाएगा जिसके अंदर जितना भी सम होगा उस एरे का वो मेरे को कैलकुलेट हो जाएगा। Can फॉर you एग्जांपल create that prefix sum array? मैम एक्चुअली मैं प्रीफिक्स सम से रिलेट नहीं कर पा रहा। ओके Okay. मैम, लेट मी जस्ट गिव इट अ ट्राई। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके मैम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन लाइक प्रीफिक्स सम? Yes. So now prefix sum is like when you are at first element, I'll show you what output it will generate. Like यस say मैम, the array is this 1 3 5 6 2 2, right? So what prefix sum is यस going to give you is 1 4 9, right? ओके 15 17 19. ओके So yeah, are you able to figure out what we are exactly doing? Like till यस one the मैम, sum. यस मैम, यस मैम। Yeah. So now can you create it? You need to, I mean, accumulate the sum till a particular index. All right. ओके ओके Yeah. So that's ओके how we ओके create prefix ओके sum मैम। array. ओके, आई अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड। ओके, तो मैम सबसे पहले तो ये मतलब आई विल डू इन जावा स्टाइल लाइक हाउ आई जनरली यूज इट। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक एरे यूजर से ले लेंगे और एक एन वैल्यू ले लेंगे, इंट एन। ओके, सो सबसे पहले मैं एक दो एरे बनाऊंगा लाइक इंट फ्रंट, एंड एक एरे बनेगा इंट All right. बैक। Why two arrays? मैम अपन को ऐड और मतलब इक्वल करना है ना, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं दोनों सम तो यूज़ कर लूँगा और फिर मैं माइनस भी करते जाऊँगा। We will not be needing two arrays for it. Like with the prefix sum approach, one array is fine. And then you can use another variable, but another array is not required. ओके Yes. ओके, सो एक सम का एरे ले लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 एंड आई प्लस प्लस, ये हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, जो सम है, सम ऑफ आई इज इक्वल्स टू ARR ऑफ आई प्लस
plus sum of I minus 1. Yes, ma'am. Okay, why array dot length minus? Okay, all मैम right. एरे डॉट लेंथ के अंदर क्या Right. होगा कि जैसे मान लो एरे 5 साइज का है, तो इंडेक्सिंग जो होती है वो 4 तक होती है। तो एरे डॉट Yes. लेंथ मेरे को जितना भी एरे है वो उसकी लेंथ दे देगा -1, मतलब उससे एक छोटा, ताकि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की जो एरर आती है वो एरर ना आए, इसीलिए मैंने एरे लेंथ डॉट -1 किया है। और अगर सी प्लस प्लस की बात करें तो यहाँ पे एरे साइज आ जाता है। Yeah, all right. That's great. Okay, so now once when you have created this prefix sum, okay, this is what we call a prefix sum array. यस मैम। So what you can do is you can run another loop, right? First of all, you can create a variable, okay, like it is इंट it सम। is yeah, current sum or whatever it is. Like sum you have already used, right? यस मैम। Yeah. So now what you can do is while you are traversing the array from first point till the last point, you can from the current sum value that we have, right? You can यस मैम। subtract. Okay, rather than creating this array, you just write a variable there. Okay, like don't create it as an array. Just write int sum. फिर मैम मेरे को एरे के अंदर सम मिलेगा नहीं? You will be able to get it. I'll just tell you what we can do is first of all find out the sum of the entire array. Okay. मिल गया मैम, क्योंकि आपने जो अप्रोच लगाई थी कि 1 फिर 4 फिर 9 फिर 15, तो वो इसी में मिल Yeah. पाएगा। Okay. That is one approach, but we can optimize it further without using any arrays. Okay. ओके मैम। Yeah. So first of all, what you need to do is you need to find out the sum of the entire array. Whatever is the total sum. Okay. Then you ओके। can start the traversing, and while traversing, like you will have two variables, the entire sum variable and a new variable. Okay. So ओके। from the entire sum variable, keep on subtracting the current element, okay, from ओके। the total sum, and add the value of the current element in the current sum, okay, new sum variable that we have ओके। created. So in that case, ओके what will मैम। happen? One by one, the elements will get deleted, and one by one, they will get added as well in a new variable. So if at any point both of these variables become equal, you can say that that is an equilibrium point. All right, you ओके। getting my point? Like, first of all, find out the total sum. Okay, so ओके। that will be an easy approach. ओके मैम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल I'll ओके सम। ओके, सो int sum is equals to जो array of I, ओके I can, ओके ओके। सो मैं पहले क्या करूंगा, सम इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा सब कोई भी वैल्यू ले ले। इंट लेफ्ट सम, ओके, इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैं लेफ्ट से सम करते जा रहा हूँ। तो फॉर लूप लगाऊंगा मैं, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन इक्वल टू ए आर आर डॉट लेंथ -1 आई प्लस प्लस, एंड मैं सम इज इक्वल्स टू प्लस इज ओके प्लस इज इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ आई। Yeah. ये इससे मेरे को जितना भी सम है एरे का वो मिल जाएगा। Okay. Yeah. Correct. यस Now मैम। you can do another loop. यस मैम। यस मैम, एक फॉर लूप और लग जाएगा। इंट Hmm. आई इज इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ -1 आई प्लस प्लस, जस्ट अ सेकेंड, एंड उसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो मेरा सम है वो माइनस करते जाऊंगा, सम इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई ith इंडेक्स तक। Huh? और यस मैम, मैं माइनस करते जा रहा हूँ, Yes. एंड इफ जो मेरा लेफ्ट सम है, हाँ लेफ्ट सम जो मेरा है, अगर वो मेरे सम के बराबर आ जाता है, तो जो मेरा इंडेक्स है वो मेरा करंट, मतलब जो मेरा इंडेक्स है वो मेरा करेक्ट होगा। ओके, एंड
अब चूंकि मैंने लेफ्ट सम के अंदर अभी तक कोई वैल्यू डाली नहीं है अभी तक, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट सम प्लस इज इक्वल्स टू ए आर ऑफ आई। इससे मेरे को लेफ्ट सम के अंदर भी वैल्यूज मिल जाएंगी एंड उस आंसर आ जाएगा। और अगर मेरा कुछ रिटर्न नहीं होता है तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगा। All right. So this यस मैम। approach is fine to me. And what is the time complexity for this approach? मैम बिग O ऑफ n ही होगी, क्योंकि अब मैंने सिर्फ 2 फॉर लूप लगाए हैं इसलिए। Okay, I will share you the GFG practice portals link, यस मैम। and मैम there you can. जस्ट अ लिटिल सेकेंड। यस मैम, आई एम बैक। यस मैम, सो ओके, सो मैम वेयर इज द लिंक? Yes, I've shared it inside the doc. ओके ओके, सो क्लास सॉल्यूशन, ओके, पब्लिक स्टैटिक, ओके। मैम एक्चुअली मैंने जीएफजी पोर्टल कभी यूज नहीं किया, तो ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। ओके, लॉन्ग एरे तो ओके। You are having a score of 60 there. यस मैम, मैंने यूज तो किया है बट आई एम नॉट फेमिलियर, सो दैट्स व्हाई शिफ्टेड टू कोड, सॉरी लीड कोड। ओके मैम, सो मैं इंट सम इज इक्वल्स टू 0, मैं सम यूज कर लेता हूँ, और इंट लेफ्ट सम, सम इज इक्वल्स टू 0, जस्ट अ डिक्लेरेशन। अब मैं इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन जो भी मेरा n है, n यहाँ पे एक सेकेंड, n आई थिंक अपन को वो दे रहा है कि इतने इटरेट करना पड़ेगा। ओके, अब सम इज इक्वल्स टू प्लस इज, ओके, ए आर ऑफ आई, इसके अंदर मेरे को सम मिल जाएगा, और इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से वापस इटरेट करना पड़ेगा, लेस देन n आई प्लस प्लस, ओके, लेट मी जस्ट, ओके यस गुड। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा प्लस प्लस आई यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पहले ऐड करना पड़ेगा, सो यहाँ पे सम माइनस इक्वल टू ए आर ऑफ आई, क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ जितना मेरा सम आएगा एरे का इंडेक्स का। इफ जो मेरा लेफ्ट सम है इक्वल टू सम आता है, तो मेरे को रिटर्न कर दो जो मेरा करेक्ट इंडेक्स है, और अगर मेरा वो सही नहीं आता है तो लेफ्ट सम मेरा क्या होगा, उसको इक्वल करना पड़ेगा ए आर ऑफ आई, मतलब उसको ऐड करना पड़ेगा बेसिकली। अब मेरे को, अब मैं यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं होता है तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगा, लाइक मेरा कुछ एरे ही नहीं आया या फिर कुछ सम ही नहीं मिला मेरे को। अब मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, आई होप। Actually, I think you need to return the position value. So for मैम that, यहाँ I पे will. कर, ओके, यहाँ पे लॉन्ग है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे लॉन्ग है, मैंने मैम पोजीशन यहाँ पे मैं रिटर्न कर दिया, ये मेरे को पोजीशन ही रिटर्न करेगा। You need to return I plus 1, because as you can see, we are not returning the, and नो also मैम, it is आई one. प्लस वन नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा कि मैं प्लस 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 आई कर रहा हूँ, तो मेरे को जो आई की वैल्यू है वो पहले से ही प्लस मिलेगी। Okay. और लेट मी जस्ट वेयर, आई होप दिस विल वर्क। यस मैम, मिल गया। ओके, ओके, सो आई प्लस वन, सॉरी। Because it is one based indexing actually, that's why. यस मैम, ओके ओके, ओके मैम, हो गया रन। Yeah, you can submit it. यप, डन। Great.
All right. So that seems fine to me. Let us now move to our next question. Okay. Yes, ma'am. Shall I close? Okay. No, you need not to close anything right now. Let me write Ma'am, on. the portal, sorry. Okay, so let me write down the second question. That Yes, ma'am. is, Ma'am, okay. You write it. the maximum number of toys you can buy with a given amount. Okay. First of all, you are given an array of integers representing price of toys. Okay. Okay. Okay, so an array of integers is given to you which represents the price of the toys, and you need to find the maximum number of toys. Okay. Okay, ma'am. Yeah, so you need to find out the maximum number of toys that you can buy with a given amount k. Okay, k is also given to you. Okay, ma'am. Yeah, so let me help you with the test case. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let us say the array that is given to you is this. Okay, and these are the prices of the toys. So the maximum number of and the value of k, let us say, that is given to you is 50. Okay, so the max toys that you can buy with amount 50 is 4. And what toys you Okay. can buy? Yeah, you can buy मैम toy with एक value. टॉय को बार बार खरीदा जा सकता है. No, actually you need to, like, if you will buy one toy again and again, so you will have the same kind of a toy, but we need to Yes, have a ma'am. different kind of a toy. All right, so you can Okay, buy ma'am. one toy only once. All right. Okay, ma'am. Yeah, so this is a test case, and let me help you with another test case as well. Yes, ma'am. See, it is- let us see value is then max toys. uh, can you tell me how many toys you can buy if you have amount 100 with you? मैम मैं सारे ही खरीद पाऊंगा. Exactly, so the output will be 3. Yes, ma'am. Okay, so yeah, this is the question. You can start with your approach. Okay, ma'am. So just a second, ma'am. Let me just uh, grasp this. Okay, my perfect toys. Okay. मैम मेरे को एक्चुअली रिटर्न क्या करना है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज जितने मैं खरीद पाऊंगा वो. Yes. ओके मैम. सो मैम इसके अंदर एक अप्रोच ये हो सकती है जो मेरे को अभी आ रही है कि अपन को खरीदना है तो टॉयज ही हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, जितना भी मेरे को एरे दे रखा है उसको सॉर्ट कर देते हैं पहले. Okay. सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जावा के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन होता है एरेज डॉट सॉर्ट करके. और उसके अंदर लेट्स से ये जो ARR है ये कॉस्ट है. फॉर एग्जांपल इंट एंड कॉस्ट इज इक्वल्स टू दिस. सो ये एक कॉस्ट का एरे है जो मेरे को दे रखा है. तो मैं पहले क्या करूँगा, इसको सॉर्ट कर दूंगा. अब इससे क्या होगा ना कि जो मेरा एरा सॉरी एरे आएगा वो कुछ सॉर्टेड मैनर में आएगा, समथिंग लाइक दिस 1 5 10 12 200 एंड 1000. आई होप यही होगा. वन ओके 111 इज रिमेनिंग. मैम ये मेरे को एरे सॉर्टेड मिल चुका है. अब मेरे को इसके अंदर एक बस लीनियर सर्च लगाने हैं ताकि काम आसान हो जाएगा. तो मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा इन आई इज इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एन, मतलब एन उसकी ARR डॉट लेंथ -1 ARR
less than equal to cost dot length minus 1 and I plus plus. ये पूरा का पूरा मेरे को कॉस्ट ड्राइवर्स करके देगा कि कॉस्ट जो एरे है वो। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो मेरा कॉस्ट है के, जो भी मेरा सम आएगा वो उससे छोटा आना चाहिए या फिर इक्वल आना चाहिए। ओके, Yes. सो एक सम का वो ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड, इंट सम इज इक्वल्स टू 0। ये अपन को इनिशियली सम ये है, तो अब मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ जो मेरा सम है प्लस जो कॉस्ट का इंडेक्स होगा अगर वो लेस देन के है, तो आप एक काउंटर और लगा दूंगा इसके अंदर, क्योंकि अब मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज लेना है, मतलब कि कितना टॉयज मैं खरीद सकता हूँ। तो एक काउंट और लगाना पड़ेगा ताकि मैं काउंट कर सकूँ कि मैं कितने टॉयज खरीद चुका हूँ। काउंट इज इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा काउंट है प्लस प्लस कर दूंगा। मतलब जैसे अगर मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं वो टॉय खरीद सकता हूँ, तो मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। काउंट प्लस प्लस करने के बाद एक सेकेंड, काउंट उससे पहले मेरे को उस सम के अंदर वैल्यू भी डालनी पड़ेगी। तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस जो मेरा कॉस्ट एरे है प्लस इंडेक्स ऑफ आई। ये एक मतलब इसके अंदर क्या होगा, जो मेरा कॉस्ट है उस पर्टिकुलर इंडेक्स का और जो मेरा प्रीवियस सम है वो इस सम के अंदर ऐड हो जाएगा और काउंट प्लस प्लस। इस ये सब इटरेशन करने के बाद मैं रिटर्न कर दूंगा काउंट कि मेरा कितना, जो भी मेरा टॉय है वो मैं कितना खरीद सकता हूँ। दैट्स इट। Okay. All right. What is the time complexity of the code? मैम बिग ऑफ एन, क्योंकि मैं एन टाइम्स ही चला रहा हूँ। Okay. So here you have used sorting function, right? यस मैम, So the time complexity of sorting function will एन also लॉग be. एन, एन लॉग एन। मैम ये काफ़ी फास्ट होगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन है। और So यस मैम, okay. All right. So if the sorting is of time complexity n log n, so what will be the time complexity of the overall code? मैम एक्चुअली इसको मैं बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये एक मेरे लिए कांस्टेंट है, लाइक जावा खुद कर रहा है ये। तो अगर मैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लूँ तो ये होगी एन लॉग एन प्लस जो मेरा बिग ऑफ एन। तो अब मान लो बहुत बड़ा एरे आ जाता है, लेट्स से 1000 साइज का, तो ये जो एन लॉग एन है ये काफी छोटी वैल्यूज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 1000 लॉग 1000। तो ये काफी छोटी वैल्यू तो नहीं आ रही, बट All right. सिग्निफिकेंट। What is greater? N is greater or n log n is greater? जस्ट अ सेकंड में मेरे को लॉग फाइल देखना पड़ेगा। मैम लॉग एन, सॉरी, बिग ऑफ एन इज ग्रेटर। या Big of n is greater. यस मैम। Why actually in n log n you are see log n will give you a positive value, right? यस मैम। Yeah. So if you are multiplying a positive value with n, so won't that be greater than simple n? नो मैम, एक्चुअली द थिंग इज कि अगर मैं कोई भी लॉग के अंदर वैल्यू लेता हूँ तो उसकी डिवीजन में डिवाइड हो जाती है वो। फॉर एग्जांपल मैं n को 5 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये तो बिग ऑफ मतलब 5 टाइम चल जाएगा, लेकिन ये जो चलेगा ये चलेगा 5 लॉग 5। तो ये कंपैरेटिवली कम है। लाइक जनरली हम जब भी कोड करना चाहेंगे तो मैं जनरली ये प्रेफर करूंगा कि मैं जितना भी इटरेशन चलेगा वो लॉग एन टाइम में आना चाहिए। तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर एन लॉग एन है, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो अगर कोई बहुत बड़ा कंडीशन आ जाता है तो ये जो एन लॉग एन है ये इसके कंपैरिजन में कम होगी। तो इसीलिए एन बिग ऑफ एन। और अगर इसकी क्यूमुलेटिव में निकालना चाहूँ तो इसकी क्यूमुलेटिव होगी
bigger of n star n log n. Yes मैम, इसकी क्यूमुलेटिव n log n स्टार n log n. यस मैम, और n जो है वो साइज है, मतलब ये जो एरे का साइज. यस मैम. All right, Raman, I think there is some confusion here. First of all, okay, let me clear one thing for you. If you are यस मैम. having an integer, say, okay, let me write down certain things. Let us say if you are having an integer a, okay, and the another integer is a multiplied by some positive number, okay. ओके मैम. So which one will be greater? A multiplied by positive number, obviously. All right. So we have n. We have n multiplied by some positive number. मैम आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट. इसके अंदर जो लॉग एन वैल्यू है वो भी कंसीडर होगी. मैंने अभी थोड़ा सा सोचा इसके बारे में. तो इसकी जो क्यूमुलेटिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ एन स्टार एन लॉग एन होगी. मेरे को वो एन लॉग एन है वो भी कंसीडर करनी पड़ेगी. No, it actually what happens when you write down a code, all right? So whatever is the highest time complexity, that is taken as the total time complexity of the code. Inside the code that you have written, we have two time complexities, right? One is n ओके मैम. and one is n log n, right? So the यस overall मैम. time complexity comes out to be as n log n for the code. Okay? ओके मैम. ओके मैम. Yeah. So that is there. Okay, let me share the question link with you. यस मैम. यस मैम. Are you clear for this time complexity thing? यस मैम. यस मैम. आई क्लियरली अंडरस्टैंड. Yeah. ओके. Okay. And for this sorting algorithm, do you know which sorting algorithm is used by this sort function? मैम एक्चुअली आई थिंक क्विक सॉर्ट शुड बी यूज्ड, कॉज जो क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी एन लॉग एन होती है. And what is the time complexity for merge sort? अब मैम आई डोंट नो. एक्चुअली मैंने मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी मैं ढंग से पढ़ी नहीं है. Okay. That is also n log n actually. और यस मैम. So यस आई. ओके. सो yeah. इसके अंदर मैं वेरिएबल ले लेता हूँ जो मेरे को रिटर्न करने पड़ेंगे, इंट काउंट एंड एक सम, क्योंकि मेरे को सम भी कैलकुलेट करना है. ओके. तो अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, जो मेरा एरे है उसको मैं सॉर्ट कर दूंगा. तो ARR एरेज डॉट सॉर्ट, और ये रहा ARR. ओके. अब एक सेकेंड मैं इसको रीसेट करना चाहूँगा क्योंकि मेरे को बाकी के जो टर्म्स हैं वो पढ़. ओके. केस द कॉस्ट, नो वरीज. सॉर्ट के अंदर मैं कॉस्ट को सॉर्ट करना चाहूँगा, सॉरी एरे को. यस. तो मेरे को ये सॉर्टेड मिल जाएगा एरे. इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल टू ARR डॉट लेंथ माइनस 1, आई प्लस प्लस. ओके. आई प्लस प्लस. ओके. अब मैं क्या करना चाहूँगा, इफ जो मेरा सम है वो प्लस जो मेरा एरे का इंडेक्स का सम है, अगर वो मेरे कॉस्ट के इक्वल आ जाता है, तब मेरे को क्या करो, सम जो है इज इक्वल टू सम प्लस कॉस्ट आई, और मेरे को काउंट प्लस प्लस कर दो. एंड अब मैं जब इसके बाहर आऊँगा, एक सेकेंड, और मेरे को रिटर्न कर दो काउंट. हो गया. लेट्स रन दिस. compilation error. Okay. Sum is equals to okay. Sorry, I actually array should be here. Okay, done. Your output. Submit.
Completed, ma'am. Okay, great. So that was about the second question. You Yes, did ma'am. pretty well in this. All right, Raman. Let us now come to the feedback part. Okay. So, like Raman, first of all, I would like to know this from you. Like, what is the level of DSA knowledge that you have right now? Ma'am, you can like binary search, linear search, sorting, sorting till quick sort. Sorry, cyclic sort. How much would you rate yourself on the scale of 1 to 10? Like 5 because I have many things to learn. Still many things like Yeah. trees and other sorting also. All right, or not an issue. So, we all are learning right now. Okay, Yeah. so, okay, let us now move to the feedback part. What I would say is like for the first question, okay? So, like I was giving that tree question to you, and then Yes, I ma'am. just got to know that you are not very much comfortable with that. So, I changed Yep. the question. So, the first thing is that it might happen that, in our interviews, we are not as lucky as such that we'll get the questions in Yes, which we ma'am. are comfortable with, so this might happen. So okay, you are in your beginner phase, so it was right, like we were able to change the question and all that stuff. But in Yes, real ma'am. life scenario, this might not happen, right? So Yes, ma'am. yeah, and then like you wrote down the code, that is correct. You were able to write down the n square approach, and then for the linear approach you needed some hints, but Yes, after ma'am. the hints you were able to write down the code, so that's fine. All right. Yes. And yeah, in the second question as well, there were no hints required. You were able to write down the question all by yourself. You solved it Yes, ma'am. completely. Just one thing, you were not able to figure out time complexity correctly at the first go. Okay. Okay, ma'am. Yeah, so that is one thing. So taking into consideration that you are beginner in this field, so on that basis, if I would say that you performed well, but like rating you on like the normal level, like how the real interviews go, on that basis I would say that maybe some things that you can work on is that first of all your problem solving skills. Okay, you Yes, should ma'am. be practicing that, of course you will do. So Yeah, you should ma'am. be practicing more and more questions. You should be very clear about the time complexities and space complexities. Okay, that part should Okay, be ma'am. very clear to you. So make sure whatever question you do, after doing that question, try to figure out the time complexity and the space complexity of the code. Okay. मैम आई स्टिल थिंक कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्टार n log n होगी आई स्टिल थिंक मैम एक बार आप कंफर्म करो मैम क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्टार n log n होनी चाहिए क्योंकि जब मैं एरे को सॉर्ट कर रहा हूँ तो काफी बड़ा एरे है तो n log n भी कंसिडर होगा Yes, actually, the time complexity for the entire code is n plus n log n and not n into n log n. Okay, when we do multiplication, is that when there is a loop inside a loop, or when there, if this sort function has been inside a linear loop, right? This n into n log n, that time complexity will be there when you have used the sort function after doing a linear traversal of the array. Okay, like let me show you an example. Suppose if you have written the code like for an I is equal to 0, I is less than an I plus plus, okay? And then when you are writing sort array dot begin, array dot end, okay? In this case, the TC would have been n into n log n. Why? ओके मैम क्योंकि वो इस लूप के अंदर है ओके First of all, we are traversing n times, that's why n. And for each traversal, we are doing the sorting, right? So that's why n into n log n. In this case, it would have been this. But the code that you have written, inside it, the sorting function is taking place separately. It is not inside any loop. So the entire time complexity of your code will be n plus n log n. Okay, ओके so मैम which so which at the end asymptotically you can write it as n log n. For like larger values of n, it will be n log n will be greater than n, so we always take the larger values. So that's why you will be writing the complete time complexity to be n log n. Clear? यस मैम यस मैम Okay, so I would suggest you that whatever question you solve, make sure that you are figuring out the TCs and SCs of that question. Okay, यस मैम and
for all the inbuilt functions that you are using, make sure that you know that what is happening behind the screens, what Yes, ma'am. algorithms are actually being implemented. Okay. Yes, ma'am. And also, like for the sorting thing, you said that you will consider it as for constant time because it is handled by Java library. So Yes, okay, ma'am. though it is handled by Java library, but as it is inside your code, so your code will be using the entire time complexity for that approach, for that sorting Yes, ma'am. approach. Okay. Yeah. So are you clear for the time complexity of this Yes, code? ma'am. Yes, ma'am. Okay, and one thing more, that while interviews, it is preferable if you just kind of have a, you should try to be, like a little professional. I mean, a little professionalism is always appreciated, right? Yes, I ma'am. mean, you don't, yeah, you can treat your interviewer as a friend, like you can discuss your approaches, and then you can let them about what you are thinking, communication skills, all those things should be there, but the Yes, ma'am. professionalism should also be there. Okay, Yes, so ma'am. yeah, these are some things. Just try to build up your logical skills, and that you can do with practice. Okay. Yes, ma'am. And get familiar with the practice portals, get familiar with the IDs that we have. Okay. Yes, ma'am. So, yeah, the practice portal of GFG is actually very much sufficient for whatever practices you need. Actually, Yes, ma'am. there is well curated list of all the sheets. All right, there are different sheets there. So we have well curated list there, sorted by company and sorted by difficulty level, sorted by submission, like every kind of thing is there. So make sure you are practicing it. And next thing is that make sure you are very much informed about TCs and SCs, and Yes, ma'am. make sure you are maintaining professionalism while interviewing. Okay. Yes, ma'am. Yeah, so that is all from my side. Anything from your side? No, ma'am. The experience was great. I All right. So thanks, Raman, for joining us. We were thank you, pleased ma'am. to have you, and we hope that this session would help you as well in your preparation journey. All the Yes, best. ma'am. Thank you. All right, guys. So we had Raman with us, and there were certain feedbacks that I have shared. So make sure you all are also considering those feedbacks to have a good interview experience. And also, if any of you is interested to take part in these interview sessions, then make sure that you are filling out the form that is there in the description of this video. All right. And all of you can share your interview experiences as well. The form is again in the description. All right. So that was all about today's session. I hope all of you liked it. If there is any feedback, any suggestions, make sure you are writing it down in our chat section. And see you all in our next upcoming sessions. Till then, keep up hard work, keep up practicing. Bye, everyone.